Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm back with my live evening session. So before starting, I'll just go on Facebook and check who's live with me here. And in the meantime, do guess what the caption is about. What do you think I intend to talk about? So I'll just go and check if I can find someone over here. Cause I guess it's Maghrib time, so most of you might be offering their prayers. Okay, so I can see someone. Do let me know who you are and where are you logging in from, and then I can see someone at the top of my screen, and maybe in the end I can bring you on camera. So what do you think this caption is about? What do I plan to talk about? Jan Mohammed. Okay, let me see. Walaikum Assalam. I hope you're fine. Okay, so you're on the camera, on the top of the camera. So I can bring you online once I go offline. Okay, so now I can see people. Uh, do pour in your suggestions and do let me know what you think about this caption. What do I plan to talk about? Like it says, what do teams need? So those of you who are working in organizations or offices or in any setup, you must be, thinking about different things. And you might be, looking at those things while working in that organization. So just come up with points, just let me know what you think. Okay, I'm waiting. Walaikum Assalam, Muhammad Shoaib. Okay, you didn't leave your comments. You wanted certain advice from me. You told me in my yesterday's session that if you can, message me in my inbox regarding some advice or guidance, but you didn't message anything. So if you have any messages, you can, just pop in those messages in my inbox and I'll be addressing those. Okay, so well, I can see many people who are. I can see you on the top of my screen, and like I can invite you right now on camera. But I know once I invite you, everyone is going to go offline, so I'm not going to force you. Maruk Naveed, thank you so much for watching. Okay, Maruk, can you give me any idea what this topic is about? What teams need? So this is going to be a topic related with 2024, and well, teams do not need these things only in the year 2024. In fact, they need it um, every year and throughout the year, or whatever year that is. So teams do need that. Okay, Muhammad Imran. Okay, you are looking at the book rack at my back. Well, there are every kind of books, but mostly those are the books, and they're related with the subjects I'm interested in. So they are books related with arts. Then there are books related with literature. Then there are books related with communication. Then there are certain social sciences books as well. Uh, Books related with psychology, then books related with parenting as well. So many different kind of books. um, and then there are my notes as well, so they are on the upper shelf in the files and many other things. So this is just the kind of books I like, so that's why they're placed at my back. Otherwise there are other books which are lying in other shelves in the house. Okay. Ghaffar, thank you so much for joining this session and watching it. Okay, so now let me just break this silence. अब चूंकि आप लोग तो मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बताने को तैयार कि what I want to talk about. Well, I want to talk about. अच्छा बस 1 मिनट दे रही हूँ. अगर किसी ने जो है बताना है तो बता दे. कोई बात नहीं, गलत हो जाए, it's okay. मैंने नहीं कहना कि गलत है. Malik Ahmed, thank you so much for joining this session and watching it live. And then you can just keep on pouring here. I was talking, you are a lawyer. No, I'm not a lawyer.
I'm an educationist, so I can talk on diversified subjects and diversified fields due to my professional experiences in the public and private sector. But basically, I'm an educationist, so not a lawyer. But yes, I do talk like a lawyer to some people, and then due to the logic and evidence I come up with, and then to other people, they interpret me as a doctor, but I'm not a doctor. And but some do interpret me as a teacher. Yes, teaching was one of the first careers that I adopted, and then so and so forth. I just went on as uh, the ways were paved. Okay. Thinking. Okay, Muhammad Imran, you said thinking. I want to talk about thinking. Okay. Yes, thinking is involved in it. Okay, but what I want to talk, it's about like what teams want in the year 2024 or everywhere. It is having a good leader. So I'm going to talk about basically what should be the core competencies of a leader in order to, run good teams, or in order to make an effective leader. So that's what I plan to talk about. Raja say thank you so much for joining the session. Wasif, thank you so much for joining. And today आज का जो session है उसमें I'll try to cover, यानी वैसे तो जो है I have listed तकरीबन 18 competencies जो कि leadership में होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती हैं, but these are the competencies which I think कि हर leader में जो कि एक team को form करते हैं उनमें होनी चाहिए, which is very important. They are not just authentic, but they are also very elaborative, and it's very necessary for a good leader to have these qualities. So इसमें जो सबसे पहली quality है, that is communication skills. If a leader does not have effective communication, तो team run नहीं की जा सकती. टीम को रन करने के लिए the person who is running the whole team has to have an effective way of communicating with them. उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि the leader would be in the position to understand कि हर टीम मेंबर की क्या स्किल्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किसको किस तरीके से जो है बात की जाए कि उसको बात की समझ आ जाए. क्योंकि इफ़ लीडर इज़ अथॉरिटेटिव, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि हम किसी भी जो है जगह पे काम करने के लिए जाते हैं और उसमें जो है किसी के टाइटल के साथ लगा होता है क्योंकि दिस इज़ द पर्सन इन चार्ज, और जैसे ही वो बंदा जो है मुंह खोलता है तो आपका दिल करता है कि भाई आप जो है ना ज़मीन खुल जाए और आप उसके अंदर घुस जाओ. और वो क्यों करता है? क्योंकि उसका जो टाइटल होता है उसके साथ लोग ये समझते हैं कि भाई हमें जो है शायद इस रोल के लिए जो है मुकर्रर किया गया है, एंड इट इज़ आवर बर्थ राइट कि जो आने वाले हैं उनको हम जो है इस तरीके से मैल ट्रीट करें कि भाई उनको आकर भी जो है ना शर्म आए कि भाई हम क्यों आए हैं इस बंदे के पास. सो ये चीज़ें जो है नहीं होनी होती. सबसे पहले जो चीज़ होती है जब आपको कोई रोल असाइन किया जाता है तो यू नीड टू फिट इन दैट रोल. सो अगर किसी लेमैन को आप जो है उठाकर जो है एक मैनेजर का रोल दे दो और उसको पता ही ना हो कि भाई मेरे नीचे जो मेरे मातहत हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मैंने किस तरीके से बात करनी है, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू फॉर्म अ गुड लीडर. सो फॉर अ गुड लीडर, good communication is necessary, and that kind of communication जिसमें the leader is able to understand the strengths and weaknesses and the levels of everyone. अब it's not necessary कि आपके पास जो है सारे एजुकेटेड लोग आ रहे हों. हो सकता है आपका जो मोड ऑफ वर्क हो उसमें जो है अनएजुकेटेड लॉट भी आ रहा हो, या ऐसा भी आ रहा हो जो कि who are very young as compared to you. Like when you are playing the role या when you are an educator, तो आप देखेंगे आपके पास जो है हर किस्म के जो है प्यूपल आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं. सो आप उन स्टूडेंट्स से जो है उनके जो है you go down to their level to address their issues. It's not that कि you sit on a pedestal and you treat everyone equally. हर एक को आप equally नहीं treat कर सकते क्योंकि हर एक का जो mental level है वो एक different तरीके का होता है. So आपने हर एक को उसके level पे जाकर entertain करना होता है, rather than कि भाई आप कहें कि भाई I'm the coordinator तो मैं तो जो हूँ इससे नीचे आकर तो बात करूँगा ही नहीं. So
इस तरीके से नहीं होता. सो वेदर यू आर इन दैट कोऑर्डिनेटर रोल, वेदर यू आर इन दैट लीडर रोल, you need to have an open mindset, a growth mindset, and you need to, adapt yourself according to circumstances, put yourself into other people's shoes, and then address their issues. This is how you can be a good leader, या जो भी आपका रोल हो. Jamshed, thank you so much for watching. um, yes, you're right, Mohammed Imran. Friendly relationship to some extent. When we are talking in professional term, तो professional term में जो friendly relationship होती है, that is in order to make the other person understand. But then again, देखिए, you need to have an open mindset in that sense कि अगर जो है आपके जो सीनियर है या जो लीडर है, इफ़ दे आर टॉकिंग इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, तो अक्रॉस जेंडर्स इट कैन गिव अ वेरी कंफ्यूजिंग एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है. एंड दैट इज़ अगेन इन दैट सर्कमस्टांस कि जहाँ पर मेंटल लेवल फ़र्क हो. लाइक इफ़ आई एम अ फीमेल, ठीक है, और मेरे जो है अंडर जो है यंग कोलीग्स काम कर रहे हैं, तो if I am too cordial with them, too friendly with them, तो उसका क्या होगा, they might not be able to understand what my mindset is. So उसमें जो है एक confusion पैदा हो जाएगी कि भाई हमारी जो female boss है, she's being very kind with us, and जब बच्चे ग्रूम कर रहे होते हैं या इवन लड़के भी जो ग्रूम कर रहे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लड़कियां, तो दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज़ और सर्टेन जो है जेस्चर्स होते हैं. देन अगेन दिस ऑल डिपेंड्स कि आपकी ग्रूमिंग किस तरीके से हुई है. अगर आपकी ग्रूमिंग होते हुए जो है यू हैव बीन एक्सपोज टू वेरियस जेंडर्स, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, सो उससे जो है यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर सीनियर्स या बॉसेस या जो आपसे एज में बड़े हैं. क्योंकि जो लोग आपसे एज में बड़े होते हैं इन वर्किंग एनवायरनमेंट, दे ऑलवेज वांट यू टू सक्सीड इन लाइफ या सक्सीड इन योर प्रोफेशन. तो उसके लिए उनके जो तौर तरीके हैं, दे आर मोर कॉर्डियल. ये फीमेल जेंडर्स में भी होता है, ये मेल जेंडर्स में भी होता है. बट देन अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आप कॉर्डियल रिलेशनशिप कर देंगे, तो उससे नुकसान ये होगा कि हो सकता है कि वो आपका जो अच्छाई है या आपका जो कॉर्डियल नेचर है उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दें. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. You need to establish your role. You need to tell your employees कि भाई you are treating them as as junior colleagues या as your children, जिनको आप जो है ग्रूम करना चाह रहे हैं, rather than कि भाई वो किसी भी जो है ना किस्म की जो है ना गलत थिंकिंग में चले जाए. अशोक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ओके, देन उसमें जो है लीडरशिप के एक जो और ओके, थैंक यू सो मच मोहम्मद इमरान फॉर योर कमेंट. एक और जो कॉम्पिटेंसी है विच इज़ नेसेसरी फॉर द लीडर, दैट इज़ टू बी एन एक्टिव लिसनर. नाउ जो लीडर्स होते हैं दे डोंट जस्ट टेंड टू से थिंग्स वट एवर इज़ कमिंग इन देयर माइंड, और ये है कि दे आर इन दैट पोजिशन कि जी हम बोले जाएँ और हमने किसी की नहीं सुननी. क्योंकि if you are unable to listen to your employees or your team, then you can't make a good leader. And this competency, it's not only necessary for leaders, it's also necessary for every individual. So अगर जो है individuals में भी ये capacity नहीं होगी कि they can't listen to people, rather जो है वो खुद बोले जाते, तो they can't be good human being. So to be a good human being, you also need to listen to the other person. अब ये जो listening वाला सिनेरियो है, अगर लीडर के या टीम के जो है एस्पेक्ट में हम जो है स्टडी करते हैं, तो उसमें ये होता है कि when the team is faced with a problem, तो the leaders have a meeting, they sit together in the form of a group, do group discussions, और उसमें the leader listens to everyone on the team. It's not that कि भाई लीडर ये कहा है कि भाई इसके तो जो है ना ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है या इसका तो ये टास्क ही नहीं है, तो इससे तो जो है मशवरा ही नहीं लेना. यू नेवर नो कि आपकी टीम में कौन सा बंदा है या कौन सी बंदी है जिसका मशवरा आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हो. सो if you are going to inculcate this habit of listening to everyone, you are going to have ultimately जो problem है उसका solution आपके पास आ जाएगा, and it would be a very viable and a creative solution. So this is another competency of a leader. Then जो है
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर बीइंग अ गुड लीडर, इट्स टीम वर्क. नाउ टीम्स जो होती हैं वो इसीलिए फॉर्मुलेट होती हैं कि सारे मिल के काम करें. अब अगर जो है आपका काम सक्सेसफुल होता है तो दैट्स नॉट दी, यानी उसका क्रेडिट सिर्फ जो है आप लीडर को नहीं दे सकते. दो फ्रंट एंड पे इट्स द लीडर, बट यह है कि लीडर are always owing the efforts and all the hard work of their team, and they always say कि भाई it was my team, वी वर्कड एज अ टीम. कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये काम मैंने किया है. जो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं तो उसमें जो है फिर नुकसान भी उनके सामने ही आता है कि कल को उनको कोई अगर से कोई प्रेजेंटेशन करनी पड़ जाती है, एंड चूंकि जो है दे आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग ऑल द क्रेडिट, सो उसमें क्या होता है कि दे आर एट अ लॉस, और एट टाइम्स बहुत बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशंस भी खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर जो है द लीडर डज नॉट नो. लाइक इन मैनी सिनेरियोज, अगर जो है हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, जो डिफरेंट जो है मिनिस्टर्स होते हैं, आई वोंट नेम एनी स्पेसिफिकली, बट यही है कि उनके अंडर जो उनके ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, इफ़ दे आर डूइंग द होल वर्क एंड देन इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट दे गो एंड से कि ओके दिस इज़ माई वर्क, एंड वो जाकर वहाँ पर जबलियाँ मार आते हैं. सो उन जबलियों का क्या नुकसान होगा कि ओवरऑल जो बैक एंड पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या जिसने जो है इतनी एफर्ट्स की हुई हैं, it creates a bad name. So instead of creating a bad name, the best practice for such leaders is they can always send those people who do the work, and they are the ones who are representing the ministers and the departments in front of the cabinet. So this is how good leaders work, rather than they only focus on themselves या ये सोचें कि भाई I'm the man and I should be in the forefront. They वैल्यू देयर टीम, और वो टीम्स को आगे करते हैं कि भाई आप जाओ और जाकर उसको प्रेजेंट करो. और प्लस बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक ओपन ग्रोथ माइंडसेट होता है, उसमें भी यही होता है कि वंस द लीडर रिकग्नाइजेस द स्ट्रेंथ्स ऑफ डिफरेंट टीम्स, they would always push them at the forefront. Okay, you go और जाओ जाकर आप डिलीवर करके आओ, क्योंकि they trust their teams, they trust their team members, and this way the team members too can grow. और ये फैसिलिटेशन ही होती है जो कि लीडर्स देते हैं या सीनियर जो मैनेजमेंट होती है वो आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, सो यू कैन ग्रो, रादर देन कि आपने अगर राइट फ्रॉम डे वन एज अ ऑफिसर स्टार्ट किया है तो आप एंड भी ऑफिसर के तौर पे करो. जब आप ऑफिसर के तौर पे स्टार्ट करते हो, इफ़ योर टीम्स आर गुड, इफ़ योर लीडर इज़ गुड, तो दे वुड ऑलवेज प्रमोट यू ताकि यू कैन एक्सेल ग्रेट हाइट्स rather than just being stagnant at that one particular place. So teamwork is another competency of a good leader. Okay, they keep teamwork in mind. अच्छा, then एक और जो competency है, that is strategic thinking. अब strategic thinking में क्या है कि the leader needs to possess the ability to think and think strategically according to the situation. अब एक सिचुएशन एट हैंड है, लाइक लेट्स कंसिडर कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है. अब वो सिक्योरिटी थ्रेट के लिए जो है, हाउ इज द लीडर गोइंग टू डील विद द सिक्योरिटी थ्रेट? इज इट गोइंग टू बी क्रिएटिव, या इज इट गोइंग टू बी विजुअल, या इज इट गोइंग टू बी जस्ट कैजुअल? नो, इट हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड. यू हैव टू कंसिडर द प्रॉस एंड कॉन्स, और उसमें यह है यू हैव टू सी द लॉन्गर गोल्स. इफ़ अगर आप जो है कोई भी ऐसा जो है डिसीजन ले लेते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर द ओवरऑल, जो ओवरऑल गोल है दैट्स नॉट गुड, then you cannot take that decision. So you always have to think and plan strategically and then go according to that decision. And then that decision, it's not necessary it's going to have a very good effect, क्योंकि वो एक मिला जुला डिसीजन हो सकता है. उसके इनफैक्ट जो डिसीजन होता है उसका जो आउटपुट है वो मिला जुला हो सकता है, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो बहुत गंदा भी हो सकता है, वो दरमियाना भी हो सकता है. बट देन अगेन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर टू ओन दैट अप. ये नहीं कि भाई डिसीजन भी ले लो और काम भी ख़राब हो जाए और एट द एंड जो है ना लीडर जो है बैकआउट कर जाए कि नहीं वो तो इतने लोग थे मशवरा देने वाले तो इसलिए मैंने ये डिसीजन किया. सो इस तरीके से नहीं होता है. एंड देन अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल रोल, क्योंकि व्हेन यू आर अ लीडर यू नीड टू टेक वेरी फर्म डिसीजंस and you have to do a lot of things which is stressful, and then you need to get out of that stress as well. So this is another competency that the leader has to have, a strategic thinking.
अच्छा, फिर इसी में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में एक और जो कॉम्पिटेंसी आ जाती है, दैट इज डिसीजन मेकिंग. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच नीड डिसीजन एट द स्पॉट. कुछ डिसीजंस होती हैं विच कैन टेक टाइम एंड दे कैन यू कैन पुट देम इन पेंडिंग, बट देन देयर आर अदर डिसीजंस जिन पे को आप पेंड नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक द डिसीजन राइट देयर एंड देन. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ लीडर जो कि इतना जो है दे आर लॉजिकल एंड they can take affirmative decisions rather than putting them in pending. So क्योंकि जो effective leaders होते हैं they always have to make informed decisions. अच्छा, देन उसमें जो है एक और जो कॉम्पिटेंसी है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी. द लीडर नीड्स टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, नो मैटर वट एवर दोज circumstances are, and they need to change according to it confidently as well. ये नहीं कि भाई वो अडेप्ट कर रही हैं बट उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो उसको चेंज कर सके. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल ऑफ गुड लीडर. देन इसमें एक जो मज़ीद चीज़ आ जाती है, दे नीड टू बी इनोवेटिव एज वेल, क्योंकि हर चीज़ जो है आपको थ्योरी में नहीं मिल सकती. यू नीड टू डू इनोवेशंस इन इट, यू नीड टू टैकल दो सिचुएशन, या यू नीड टू प्रिपेयर प्लान्स, या यू नीड टू कम अप विद वायबल इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स. अब जिस तरीके से हम अगर देखें, हम डिजिटल मार्केटिंग को देखें, तो डिजिटल मार्केटिंग में देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट है इट्स ऑल बीइंग इन द डिजिटल स्पेस. सो यू नीड टू नो how to be a digital marketer. And digital marketer, it's not something difficult. It is, you need to manage yourself on different platforms, चाहे वो आपके social platforms हैं, चाहे जो है you're running a campaign, चाहे जो है social media marketing है, या कैंपेन्स आप चला रही हैं या एड्स चला रही हैं. सो दिस ऑल कम्स अंडर द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो जितना ज़्यादा जो है आपको ये चीज़ें पता होंगी, यू विल बी एबल टू फिट इनटू दिस सिनेरियो. सो और फिर इसमें जो है इनोवेशन आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. यू कैन कम अप विद क्रिएटिव पोस्ट, यू कैन डू कॉपी राइटिंग, यू कैन turn the whole brand into call to an action brand. उसमें आप प्रोडक्ट्स जो है सेल हो सकते हैं. सो देयर इज सो मच. सो इनोवेशन इज़ वेरी नेसेसरी एंड इनोवेशन इज़ अ गुड थिंग अगर एक लीडर वो इनोवेशन पोजेस करते हैं. नाउ डिजिटल मार्केटिंग, it is required in every field, every niche, every business. So whatever you are doing, you need to be creative and you need to have that innovation. अच्छा, then जो है a good leader, they need to be empaths. और empaths ये है कि when they're able to understand the feeling of their team members. अगर जो है कोई या emotionless है, an emotionless person cannot be a leader. They can be a dictator, but they can't be a leader. So you need to have emotions, and it is one of the core competencies of being a leader. And having emotions, in the sense that you are able to understand your teams in a better way. So having emotion, it's not a weakness, it's rather a strength. So जिन लीडर्स में या जिन टीम्स के जो लीडर्स हैं उनमें इमोशंस हैं, एंड दे आर एबल टू टेक देयर टीम्स अ स्टेप अहेड, सो वो टीम सक्सेसफुल होती हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द foremost qualities for being a good leader. Okay, let me see आपने क्या मुझे मैसेजेस किए हैं, so I can go ahead. Okay, मोहम्मद इमरान आप कह रहे हैं प्लीज़ नेक्स्ट टाइम पोस्ट टॉपिक बिफोर कमिंग लाइव. वाई इज़ दैट सो? अगर मैं आपको टॉपिक पोस्ट कर दूंगी तो फिर तो सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा ना. सो इसलिए मैं तो आपको नहीं जो है टॉपिक पोस्ट करती. वेल आई विल सी. वैसे इफ़ आई कम लाइव नेक्स्ट टाइम, सो वुड यू बी रीडिंग ऑन इट? इसलिए आप मुझे कह रहे हैं. ओके, लेट मी सी. आपने उर्दू में कहा है कि एक दफ़ा अपने टॉपिक को पोस्ट करें ताकि हम इस पर अपनी कोचिंग क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं. इट्स ओके, यू नो व्हाट, माय टॉपिक्स आर मोस्टली एक्सटेम्पोर, and I do not prepare these topics. I have outline in my mind, क्योंकि ये जो mostly topics हैं, these are the topics which I have faced during my professional life. जो no matter whatever I have been doing with time, yes, चूँकि जो है I have been doing hands on
स्किल्स ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग्स करवाती भी मैं रही हूँ. सो उसके लिए जो है दीज आर द टॉपिक्स विच आई थिंक कि भाई दीज आर द नीड ऑफ टाइम, और ये यूनिवर्सल ग्रीन टॉपिक्स हैं. सो दैट्स वाई whenever I come live, I do not, I just, take the topics on the spur and decide कि भाई I have to cover this topic today, and that's how I do the topics. अगर मैं जो हूँ लाइव आने से पहले आपको बता दूंगी टॉपिक क्या है, तो यू अक्सर आप में से जो है ना वैसे ही भाग जाएंगे. और क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि जब कोई चीज़ एजुकेशनल आ रही होती है तो उसके लिए माइंड वैसे ही क्लोज हो जाता है. सो अगर उसमें एक सस्पेंस रहे तो आप लोग ज़्यादा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इवन दो आपको शायद उनके ऊपर कुछ पता ना भी हो, बट स्टिल with the live examples you can resonate very much to your own lives. खासतौर पे वो लोग जो काम कर रहे हैं या इन प्रोफेशनल स्पेस में हैं, ये रिमोट वर्किंग इन्वायरमेंट में है, तो टॉपिक्स इन वन वे और द अनदर कनेक्ट हो जाते हैं विद डिजिटल स्पेस भी हो जाते हैं, रिमोट वर्किंग इन्वायरमेंट से भी हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट में जो फील्ड में काम करें उनसे भी हो जाते हैं. सो दैट्स वाई आई डू नॉट शेयर, बट इफ़ यू वांट तो चले एक दिन मैं शेयर करके देख लूँगी एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट. Otherwise, live में जो है you can answer, you can ask any kind of question. um, you are concerned about kids regarding what? So do let me know what are you concerned, क्योंकि मेरे टॉपिक्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि बच्चे ना देख सकें. इट्स वेरी मच ओपन एंड इट्स वेरी मच प्रोडक्टिव एज वेल. एंड येस, उसमें कुछ जो थीम्स हैं, आई टेंड नॉट टू discuss those themes, but then I have to tell you things which are reality based, and those things happen in life. um Yusuf Khan, you're saying assalamu alaikum. Okay. Okay, you're giving me a compliment. Okay, thank you so much. I'm not going to read your compliment, so it's obvious everyone can read it, बट थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. ओके, देन जो है लीडरशिप की एक और जो क्वालिटी होती है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ये है कि दी लीडर्स नीड टू एड्रेस द इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट जो भी होते हैं प्रॉम्प्टली. आप जो है आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया है, यू कैन नॉट पुट इट इन पेंडिंग, या आप ये नहीं कह सकते अच्छा पहले मैं ये काम कर लूँ फिर मैं इसको सोचूंगा, क्योंकि व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इट रिक्वायर्स टू हैव अ रेजोल्यूशन. क्योंकि जो रेजोल्यूशंस होती हैं, अगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, अगर उनके रेजोल्यूशंस ना मिले तो वो जो है लड़ाई झगड़ों में भी चेंज हो सकती हैं और बड़े बड़े फड्डे हो सकते हैं. सो वाई वेट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स टू टर्न इनटू फड्डास. Rather it's better to resolve it there and then. So you might be diverting from your other work, but you have to resolve that conflict. So for that a leader has to be prompt in taking decisions. Mohammad Waqas, thank you so much for joining in. Okay, देन इसमें जो है लीडरशिप की एक और जो क्वालिटी होती है, दे हैव टू बी गुड टाइम मैनेजर्स. दे नीड टू मैनेज देयर टाइम, क्योंकि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस. भाई टाइम अगर निकल गया तो निकल गया, वो टाइम जो निकला हुआ है वो वापस नहीं आएगा. जिस तरीके से जो है एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एंड इफ़ वी लिव इन द प्रेजेंट और हम उस दिन को इस तरीके से ट्रीट करें कि आज ये हमारा आखिरी दिन है, तो देन यू विल सी कि यू विल बी एबल टू अचीव सो मच. सो इसी तरीके से जो इफ़ेक्टिव लीडर्स होते हैं या गुड लीडर्स होते हैं जो टीम्स फॉर्मुलेट करते हैं, दे नीड टू मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली. और उस टाइम में दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग. इफ़ योर वर्किंग रूटीन इज़ फ्रॉम 9 to 5, you have to do a lot of things to do justice with what you are taking back home. So for that you have to be a good time manager. और अगर आप time manager अच्छे नहीं हैं, then always make a calendar and go by the calendar and strategize whatever content or whatever your plan is या whatever your schedule is all week. चाहे वीकली प्लान करें, चाहे मंथली प्लान करें, चाहे ईयरली प्लान करें, इन एडवांस प्लान करें, बट डू प्लान. क्योंकि विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट रेगुलेट योर लाइफ. वो हम कहते हैं ना, बचपन में हमेशा जो है कहते थे, जब भी बच्चों को जो है ट्रेन करना होता था कि जी इनको डिसिप्लिन करो, उस टाइम पे समझ नहीं आता था भाई वो डिसिप्लिन क्या होता है. बट देन अगेन वो डिसिप्लिन यही होता है कि इफ़ यू कैन वैल्यू टाइम योर सेल्फ, यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन दैट दे ऑल्सो नीड टू वैल्यू टाइम. क्योंकि जब वो डिसिप्लिन होंगे, टाइम को वैल्यू करेंगे, तो everything is going to be in an organized manner and everything is going to flow very smoothly.
Yusuf Khan, your favorite. Okay, what's your favorite? Do let me know in the comment as well. Okay. देन अच्छा, देन एक और जो कोर कॉम्पिटेंसी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं जब वो लीडरशिप के रोल में आते हैं, दैट इज डेलीगेशन. Delegation of powers, actually delegation of powers is basically कि भाई you have a lot of work at your hand and you have a team under you who is carrying out different tasks. So as a leader it is your responsibility किसकी क्या strength है, उसके मुताबिक आप powers या उसके मुताबिक जो काम है आप उनको delegate करते. No one person can do everything on their own. अब अगर leader है, the leader might have to attend many meetings या have to be present elsewhere, जो कि टीम नहीं कर सकती. बट देन अगेन अगर टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं हु कैन be representing the overall office या overall work space on their behalf, तो वो उन teams को भेज सकते हैं. But then again this is the responsibility of the leader to think and then delegate powers accordingly. ये आप जो है देखिए, आप में से बहुत से लोग जो कि रिमोट वर्किंग सेटअप में हैं वो इसी तरीके से अपना वर्क चलाते होंगे. लाइक हो सकता है कि ग्राफिक का काम जो है एक बंदे को आता हो, डिजिटल मार्केटिंग का दूसरे को आता हो, किसी तीसरे को कॉपी राइटिंग का या कंटेंट राइटिंग का वर्क आता हो. तो आप इस तरीके से जो है अपना जो काम होते हैं वो डेलीगेट कर जा देते हैं उन टीम्स को या उन लोगों को जो कि वो काम आपसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. सो यू कैन फोकस योर अटेंशन ऑन अदर थिंग्स, क्योंकि हो सकता है यू माइट बी अ गुड क्लोजर बाय, यू माइट बी क्लोजिंग बिजनेस कॉन्टैक्ट्स विद पीपल. सो हर टीम में जो है अगर 3-4 लोगों की टीम है तो हर एक का जो है ना कोई रोल होगा. फॉर दैट it's the responsibility of the leader to think strategically and divide those roles into the teams as per requirement. Okay, then एक और जो चीज़ है, okay, let me see if I can see any comments which I might have missed. Okay, then जो है एक और जो चीज़ है that is resilience. अगर जो है देखिए, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग रेजिलियंस एज अ लीडर यू नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट रेजिलियंस टू. क्योंकि रेजिलियंस ज़्यादा जो है कब जो है डिमॉन्स्ट्रेट होता है इन द फेस ऑफ चैलेंजेस या इन द फेस ऑफ difficulties. If you are able to persevere through those difficulties, so then you are definitely a good leader. क्योंकि जो teams हैं जो आपसे जो है आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, they are going to look at you as a role model. So as a leader you are the role model and people are going to look at you. How did you perform in certain challenges? What did you do? Did it really work? What happened? So if you just pick up your life examples, you can observe and come up with many examples when you acted as a real hero या heroine. और यह है कि then people they always remember those examples and then they can quote and आपको भी जो है वो पता चलती रहती है लोगों के मुंह से, okay, this is when you acted as a hero या people were really inspired by your story, what you did. So this is another form of a good leader, that they are resilient. और then जैसा मैंने कल बात की कि for any success the driving force behind success it's motivation. So for a good leader they need to be motivated themselves and then they should have the ability to motivate their team members as well. क्योंकि अगर team members को motivate नहीं किया जाएगा तो काम आपका नहीं होगा and you cannot form a good team. And then काम का जो output है उसके भी जो है और ही तरीका होगा when your team is highly motivated. So you need to keep your team motivated. अच्छा, फिर इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है अनदर कॉम्पिटेंसी, दैट इज़ इथिकल लीडरशिप. अब इथिकल लीडरशिप क्या होती है? इथिकल लीडरशिप यही होती है कि भाई द लीडर हैज़ टू बी एथिकल, दे नीड टू हैव सर्टेन एथिक्स इन देम. और जब आप में खुद एथिक्स होंगी ना तो यू कैन एक्सपेक्ट, अव्वल तो एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए. एक्सपेक्टेशन इज समथिंग जो कि मोस्टली जो है ना इट्स नॉट मेट. So never expect anything from other people. But yes, if you have the ethical values and you are a core observer of those ethics, तो automatically जो आप से लोग इन्फ्लुएंस ले रहे हैं या इंस्पिरेशन ले रहे हैं, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट दोज एथिक्स देमसेल्व्स. अब आप देखें बहुत सी ऐसे ऑफिसेज जहाँ पर जो है रेगुलर बेसिस पे जो है 5 times a day प्रेयर्स ऑफर की जाती हैं.
अब हो सकता है कि बहुत से लोग जो कि ज्वाइन करते हैं, दे माइट नॉट बी वेरी नमाजी व्हेन दे ज्वाइन, बट येस व्हेन दे सी द कल्चर एंड दे सी कि भाई everyone in the environment, they are offering prayers 5 times a day, yeah, they are doing things which are part of our religious practices. So उसमें जो है क्या होता है कि कोई अगर नॉन प्रैक्टिसिंग बंदा भी है या बंदी भी है, तो दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स. सो इट ऑलवेज ये जो ऐसी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, दीज आर एथिकल प्रैक्टिसेस एंड दे ऑलवेज इंड्यूस गुड वाइब्स ऑन द अदर पर्सन. और प्लस व्हेन यू प्रैक्टिस गुड थिंग्स, सो ऑटोमेटिकली उससे जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो ग्रूम हो जाती है. एंड देन जो रिलीजन होता है, आई वुड ऑलवेज से वो एक पर्सनल मामला होता है. यू डोंट हैव टू शो इट टू पीपल कि हाउ रिलीजियस यू आर, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, क्योंकि वो आपका और अल्लाह का मामला है. सो वट एवर यू आर डूइंग इन दैट पर्सनल स्पेस, इट्स टोटली बिटवीन यू एंड योर अल्लाह. So you don't have to show it to anyone. But yes, ethical practices and ethical leadership is that you're firm in your ethics and your values, and you need to maintain that as well. Okay, then एक और जो इसमें चीज़ आ जाती है, that is networking skills. नेटवर्किंग स्किल्स अगेन यही है कि जो लीडर्स होते हैं, who are good leaders, they practice this, they have they have a strong professional network, और उसमें जो है वो किस तरीके से जो है कल्टिवेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या डिफरेंट जो है रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं. दैट हेल्प्स अ लॉट इन in progressing in the teams and in the work and in the overall output of the whole organization. So networking skills is very important, क्योंकि अगर आप डिजिटल स्पेस में हैं तो विदाउट नेटवर्किंग यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट इवन फाइंड वर्क. So if you are on LinkedIn, या if you are on Facebook, या if you are on any other marketplace, Fiverr पे हैं, Upwork पे हैं, जितने भी working platform है, you need to network with people, you need to collaborate with like minded people जो कि आपकी field से related है. And फिर इसी तरीके से you might end up in having good projects. या ये है कि if you have worked with a certain client and the client knows कि okay, this is your way of working and this is your professionalism and this is how you do your work, so then they are going to refer to other people, and then those people are going to connect you via that particular person. So networking, it's very important. So वो कहते हैं ना कि your net worth is your networking. So the more communicative you are, the more networking you have, the more you are able to resonate with people, collaborate with the right kind of people, collaborate with growth minding mindsets of people. So you are going to be a very successful person. अच्छा, देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है एज अ कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ अ लीडर, दैट इज दे ऑलवेज लिसन टू फीडबैक. एंड फीडबैक वो अपनी टीम से लेते हैं और फ्रॉम अदर पीपल लेते हैं, एंड देन दे गिव ड्यू रिकग्निशन. लाइक अगर आपके टीम में एक बंदा है, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, यू आर ऑलवेज गोइंग टू ओन देम अप एंड देन यू आर गोइंग टू गिव देम अ पॉजिटिव फीडबैक. और उस फीडबैक पे हो सकता है यू माइट गिव देम सर्टेन इंसेंटिव्स क्यों दिए जाते हैं? सो द पर्सन लाइक दोज हु आर बूमर्स या हु आर जस्ट न्यू शेयर्स एंड दे आर जस्ट एंटरिंग देयर वर्क लाइफ, सो यू नीड टू गिव देम सर्टेन इंसेंटिव्स ताकि वो मोटिवेटेड रहे. इंसेंटिव्स इसलिए नहीं होता है कि आपने जो है किसी को लालच देनी होती है. इंसेंटिव्स इसलिए होते हैं कि इफ़ समवन इज़ डूइंग समथिंग गुड, इट्स अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन. सो मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक, जो कि अंदर से आपके जो अलाइन करती है आपके गोल के साथ, दैट इज इंट्रिंसिक. पर यह है कि इफ़ इट्स इंट्रिंसिक इज यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ इंसेंटिव ताकि जो है द पर्सन इज दे डू मोर गुड in order to achieve the output. So those who are naysayers, you always have to give them incentives and you have to motivate them in the right direction so they can reach their full potential. This is another core competency of a leader. Then जैसा मैंने पहले बात की कि different circumstances require different decisions and different steps to be taken
in due course of time. जितना crisis management है, crisis management में again it's again a very difficult task for a leader to manage that crisis or in that particular time. But then again, it is something that the leader has to own, and they have to take up that responsibility according to the challenge, and they have to navigate according to it. अच्छा, देन इसमें जो है, यानी आई गेस मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंसीज तो 15-16 तो कवर कर ही ली होंगी, बट देन दे another very important competency for a leader. बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगी ये जो कॉम्पिटेंसी है ना, this is not only for a leader, it is for everyone, and that is continuous learning. Continuous learning is one thing which never stops. क्योंकि हम अपने आप को जो है ना कभी भी प्रोफेशनल नहीं कह सकते unless and until we have that capacity of learning. So we need to learn every day. Every day we need to learn new things. क्योंकि जिस तरीके से landscape change हो रहा है and it's becoming more and more digitized. So in that digital atmosphere and landscape, you need to own and learn new skills. और उन new skills के साथ you need to have hands-on experience as well. If you cannot have a working space, like you cannot go and work in an organization, what you can do is you can always connect with like-minded people and you can learn from their experiences. Or you can maybe in due course of time you can partner up with different people and become their business partners, and all of you can having that growth mindset, you can grow together. So that also helps. And then you can create your own businesses, you can become your own boss rather than depending on people. So there are so many ways, but to learning, it should never stop, and you should always keep on learning. And there is someone who is at the top of the camera. I don't know who you are, but I'll try to bring you on camera. So as I'm just ending this session, and okay, rotate ho gaya. Okay, so these are the core competencies which I wanted to discuss, and this is what teams require in the year 2024, even in 25, 26, 27 and so on and so forth. जितने भी years हैं भाई, ये core competencies हैं जो कि एक leader के लिए necessary हैं. और even जो है अगर leaders नहीं होते, teams भी होते हैं. teams में कोई भी बंदा अगर lead कर रहा होता है तो these are the things या these are the competencies which are required. And even as an individual, even though if you're not in that leadership role, still you can acquire these competencies, and they're not difficult. कि आप कहो कि नहीं भाई ये competencies तो जो है ना खुदा की तरफ से हैं, तो ये हमारे में नहीं हो सकती, हर एक में हो सकती हैं. You just have to have that mindset of a growth mindset, and you need to keep on growing and keep on learning, and that is how you progress in life. So it really does not matter कि whether आपका background जो है management का है, project का है या security का है, you have to have a growth mindset. So that is all what I wanted to share. Now just let me see who I can bring on camera, and if anyone's interested, there's one person. I'll see if I can bring him on camera. Let's see. And he has any experience to share regarding any organization. There was another person whom I wanted to, okay, declined. It's okay, no worries. Let's see, Wasif, do you want to come online? Okay, I'm just waiting. Okay, Muhammad Imran, do you have another question? Is there a question you want to ask me? Okay, I'm still adding. Wasif, if you don't want to come on camera, you can always decline. I'm not going to mind. Don't worry. Jamshed. Okay, thank you, Karisa, for joining in. Okay, Wasif, I think still आपका जो है ना नहीं आ रहा. Malik Amir. Oh, thank thank you for joining in. Well, Malik Amir, he's my university colleague, and I am going to bring him on camera, and I'm sure he would come. Oh, Malik Amir, you need to,
be on the top of my screen so that I can bring you on camera. So he's a really good class fellow और मेरा बहुत अच्छा university time गुजरा है. When I was doing my masters in English literature and linguistics, so he was my class fellow. So मेरे बारे में अगर कुछ किसी ने जानना हो तो आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा. What kind of person I was, or what kind of teacher I was. So he would tell you about me. Okay, this is one person. Let me see if I can add him. वाह जी वाह, कोई ऐड हो रहा है. ओके, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन बात कर रहे हैं? मैं क्लैन बात. अच्छा, आप ऊपर कैमरे में आए हुए थे, लाइव आए हुए थे, तो आपने क्या सेशन मेरा ज्वाइन किया है? नहीं, मुझे तरीका नहीं है. अच्छा, मैंने आप ऊपर कैमरे में चूंकि स्क्रीन पे शो हो रहे थे इसलिए मैंने आपको जो है इनवाइट किया है. तो मेरा जो सेशन था दैट वाज रिगार्डिंग कि व्हाट टीम्स नीड इन द ईयर 2024. जो लीडर्स होते हैं, जो टीम्स फॉर्मुलेट करते हैं, उनकी क्या कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं. तो आपने सुना है या बस आपने अभी अभी ऐसे ही आपके जहन में आया तो आपने ज्वाइन कर लिया? वैसे ही अभी अभी अच्छा, वैसे ही अभी अभी है. आया. अच्छा, चलें फिर तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा. तो आपने क्या पहले भी सेशंस ज्वाइन किए हुए हैं? आज पहली दफा आया हूँ. आज पैकेज लगवाया. अच्छा, आज पैकेज लगवाया. चलें, आप इस तरह कीजिएगा कि आप मैं आपको जो है रिमूव करती हूँ. फिर जब ये सेशन जो है एंड हो जाए तो आप इसको दोबारा जो है वॉच कर लीजिएगा. और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपने कुछ डिस्कस करना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा इनबॉक्स में. ठीक है. जी ठीक. जी थैंक यू. बेहतर. थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. ओके, सो आई जस्ट रिमूव हिम. इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया. लेट्स सी ये कौन है, इनको हम ज्वाइन करवाते हैं. Okay, so it's still adding, and I don't know who this person is, but I'll just see. Okay, I'm still adding. So I'm just checking out if anyone can come live, and then we can talk. Maruf, do you want to come online? Okay. अच्छा जी, ये जो भी ऐड हो रहे हैं, अगर आपने जो है ऑन कैमरा नहीं आना, इट्स द डिसीजन इज टोटली योर्स. यू कैन ऑलवेज डिक्लाइन. आई वोंट फोर्स यू टू कम ऑनलाइन. ओके, नो आंसर. चलें जी, ठीक है. सो दैट वाज ऑल फॉर द सेशन, एंड इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेरीज, या ये है कि इफ दिस टॉपिक वाज 100% क्लियर एंड यू लाइक दिस सेशन, so do share your emojis and do share your stars, या अपना फीडबैक जो भी है वो मुझे अगर नजर आ जाएगा तो आई विल बी हैप्पी. And then I can just sign off and say bye bye to you. And Malika Amir, if you're listening, kindly अगर आप screen पे आ जाते तो I could add you. Okay, there's one person. I don't know who this is. I'm just trying to bring him on camera. So couldn't add क्योंकि इनको जैसे पता चला मैं इनको online ला रही हूँ तो ये offline चले गए. It's okay, it's totally okay. I don't know who this person is. ये अभी अभी जो है ना, मुझे लगता है इसमें नमूदार हो रहे हैं. So let's see. I'll just check out. कनेक्ट करके जो है ऑफ चले जाते हैं. चलें, इट्स टोटली ओके. चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ और डिस्कस करेंगे लाइव. वोंट ब्रेक द साइलेंस, वोंट शेयर, वोंट टेल यू व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट. जो आपको क्यों ड्रॉप करूंगी उससे जो है आपको बताना पड़ना है कि वे व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट.
Mostly, I talk about things which are very common and which are concerning each one of us. It's just that we know they're there, but we don't want to discuss about them. Why don't we want to discuss about them? Maybe we are fearful कि भाई उस पर बात करेंगे तो क्या होगा, या maybe it's just that we don't think ourselves competent enough to discuss on such things. But then again, you need to break the bondages of fears and not taking action, and you have to become agents of change, no matter आपकी जो भी field है. So that would be all for today. Take care. Allah Hafiz. दुआओं में याद रखिएगा, and don't forget to share the emojis. मैं अभी Facebook पे जाकर ना चेक करूंगी किसने कितनी emojis भेजी हैं, और फिर मैं कमेंट में भी बताऊंगी कि भी आपने मुझे ये emoji भेजी है ये नहीं भेजी. ठीक है, चलें, ठीक. अल्लाह हाफिज.